Okay, good evening, guys. Hello, everyone. Hello, hello, hello. I hope you all are doing very good. Let me know in the chat box if I'm clearly audible and visible to each one of you. Is it fine, my audio and my video? Yeah. Is it fine, guys? My audio and my video. Am I clearly audible and visible to each one of you? Okay, so today we are going to start with a very important topic, that is the mechanism of hormone action. Like most of the students find this topic very confusing because इतने सारे hormones हैं, कैसे काम करते हैं, क्या mechanism है, बहुत ज़्यादा confusion हो जाता है. So today we are going to understand in depth how these hormones are classified, and on the basis of their classification, how do they act upon the various organs of our body, how do they manipulate the metabolism and everything. So today's session is going to be very much informative for all of you, and of course it is going to be super duper important for your NSEJS preparation. So I believe you all are very much excited to learn new things today. Well, let's start with this. So मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. सो हार्मोन्स के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं. हार्मोन्स क्या होते हैं, गाइस? सो दीज आर व्हाट, एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू टेल मी व्हाट आर हार्मोन्स? सो हार्मोन्स जो होते हैं बेटा, वो इंटरसेलुलर मैसेंजर्स होते हैं. व्हाट आर दे आर इंटरसेलुलर मैसेंजर्स. इन आवर बॉडी ऑल द ऑर्गन्स दे वर्क इन अ वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर. जैसे बेटा हमारा ब्रेन जो है या हमारे जो ऑर्गन्स है वो आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन. सो ब्रेन है बेटा, अगर वो हार्ट को कमांड देना चाहता है, अगर हमारा ब्रेन जो है अगर वो थायराइड ग्लैंड को कमांड देना चाहता है, सो गाइस द एक्टिविटीज कैन बी ईदर मैनिपुलेटेड थ्रू नर्व्स, जो बेटा हमारे नर्व्स के थ्रू हमें इंपल्सेस कैरी होके आते हैं, और बेटा इट कैन ऑल्सो बी डन थ्रू सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स, दैट इज योर हार्मोन्स. तो हार्मोन्स क्या है? दीज आर इंटरसेलुलर मैसेंजर्स जो बेटा आपके ग्लैंड से, इंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं. दे एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, एंड after getting entered into the bloodstream they reach to the effector organ, जहां पे बेटा वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं. किससे बाइंड करते हैं बेटा? टारगेट ऑर्गन पे पहुंच के वो टारगेट सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट या उस सेल के अंदर प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड करते हैं. नाउ दैट बाइंडिंग इंड्यूसेस द certain other chemical pathways, certain other mechanisms, जिसकी वजह से बेटा आपको एक फिजियोलॉजिकल चेंज देखने को मिलता है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सो हार्मोन रिसेप्टर्स, यस व्हाट आई टोल्ड यू कि हार्मोन्स को बेटा काम करने के लिए क्या चाहिए? उनको काम करने के लिए चाहिए उनका रिसेप्टर मॉलिक्यूल. क्या चाहिए? रिसेप्टर चाहिए. सो बेटा इस चीज के आने से पहले हमें समझने की जरूरत है कि रिसेप्टर्स कितने तरीके के होते हैं. सो गाइस रिसेप्टर्स जो है वो हमारे दो तरीके के हो सकते हैं. इट कैन बी अ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. First, it can be a membrane-bound receptor that will be present on the plasma membrane of the cell, or it can be an intracellular receptor. It can be an intracellular receptor. तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बेटा साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है और न्यूक्लियस में भी हो सकता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस. तो इसे हम न्यूक्लियर रिसेप्टर भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियर रिसेप्टर भी कह सकते हैं. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? तो वी जस्ट लर्न वन थिंग दैट एक हार्मोन जो है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करके अपनी एक्टिविटी को इंड्यूस करता है. और बेटा रिसेप्टर्स दो तरीके के हो सकते हैं. इधर इट कैन बी प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर या सेल सर्फेस रिसेप्टर, और the receptor can also be present either in the cytoplasm or mostly it occurs in the nucleus, जिसे बेटा हम न्यूक्लियर रिसेप्टर भी कह सकते हैं. सो बेटा जब एक हार्मोन अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है तो इट इज जस्ट लाइक अ लॉक एंड की हिपोथेसिस. यू कैन अज्यूम इट टू बी. बच्चों को बहुत अच्छे से पता होता है व्हाट इज लॉक एंड की हिपोथेसिस. जैसे बेटा एक ताले की एक चाबी होती है, वैसी एक स्पेसिफिक रिसेप्टर अपने एक स्पेसिफिक हार्मोन से ही बाइंड करेगा. Okay, and this binding forms what? So the binding of a hormone with its associated receptor makes a hormone receptor complex. What does it make? It makes a hormone receptor complex. Now this is very important. So you guys can look at here. Okay, so यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि you have the hormone A. So बेटा ये आपके पास हार्मोन A है. तो ये हार्मोन बेटा हमेशा अपने रिसेप्टर से ही बाइंड करेगा. Okay, this one is hormone A and this is the receptor. Same goes, this is your hormone B and this is the shape of its receptor. तो बेटा ये देख सकते हो, दिस इज जो बी हार्मोन, ये इसका रिसेप्टर है. ये आपका ए हार्मोन है, ये बेटा इसका रिसेप्टर. सपोज करो दिस इज द रिसेप्टर फॉर ए हार्मोन. ओके, सो रिसेप्टर्स जो होते हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक टुवर्ड्स द हार्मोन्स, एंड यू कैन से इट इन अ ऑपोजिट मैनर, इन अ रिवर्स मैनर, दैट हार्मोन्स आर वेरी स्पेसिफिक टुवर्ड्स योर रिसेप्टर. ऐसे नहीं कोई हार्मोन किसी भी रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा.
या ऐसे भी नहीं है बेटा कोई भी रिसेप्टर किसी भी हार्मोन को खुद से बाइंड करने देगा. द बाइंडिंग इज वेरी स्पेसिफिक. आई होप यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है. सो नाउ ये जो बेटा आउटकम है दैट इज दी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बना, यही यही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बेटा कुछ जादू करता है. क्या करता है? कुछ एकदम ऐसा जादू सा करता है, ओके, जिसकी वजह से आपके सेल में एक नया फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है. क्या देखने को मिलता है बेटा? एक नया फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. ओके, सो वो ऐसा कोई जादू नहीं है. बेसिकली द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ट्रिगर्स सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शंस. नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दोस बायोकेमिकल रिएक्शंस यू गेट अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. ओके, नाउ लेट्स सर अब किस तरीके से मैकेनिज्म वो पहले समझने से पहले वी नीड टू नो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द हार्मोन्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन्स को बेटा हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. इससे भी बेटा आप ये कह सकते हो कि हार्मोन्स जो हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं, राइट? इट कैन बी वाटर सॉल्युबल, इट कैन बी वाटर सॉल्युबल, ओके, इट कैन बी वाटर सॉल्युबल. आई गेस दिस फॉन्ट इज वेरी थिक, राइट? इसको थोड़ा पतला कर देता है. ओके, तो इट कैन बी वाटर सॉल्युबल और इट कैन बी लिपिड सॉल्युबल. इट कैन बी लिपिड सॉल्युबल. वेरी इंपॉर्टेंट. जो हार्मोन्स 2 तरीके की ऑन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट 2 तरीके के हो सकते हैं. इधर दे कैन बी वाटर सॉल्युबल और दे कैन बी लिपिड सॉल्युबल. सो दे कैन बी हाइड्रोफिलिक और दे कैन बी लायोफिलिक. सो बेटा अब हम आगे चलते हैं, वाटर सॉल्युबल कौन से होंगे, लिपिड सॉल्युबल कौन से होंगे. सो गाइस वेल जो हार्मोन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर they can be further classified into 4 categories. First is the amino acid derivatives. अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स मतलब वो हार्मोन्स बेटा जो आपके एक अमीनो एसिड से डिराइव हो रहा है. अमीनो एसिड्स आप सब जानते हो. अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? सो दे आर दी मोनोमर्स ऑफ द प्रोटीन्स. वो प्रोटीन्स बनाते हैं, राइट? अमीनो एसिड बेटा बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता चला जाएगा. अमीनो एसिड्स विल कम टुगेदर एंड दे विल मेक व्हाट? सो दे विल मेक the protein. Okay, so I should say protein से पहले they will make a polypeptide. Now the polypeptide will undergo further folding to make a protein. Okay, now so amino acid derivatives for example जैसे epinephrine और norepinephrine जो है बेटा वो टायरोसिन नाम के अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं. Melatonin and serotonin, these two hormones are derived from the amino acid tryptophan. वेरी इजी. तो पहली कैटेगरी हमने क्या पढ़ी? अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स मतलब द हार्मोन्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स. एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम टायरोसिन, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम ट्रिप्टोफैन. Then comes the next category, that is peptide and protein hormones. Now guys, do you know about the difference between a peptide and a protein? अगर आपका अमीनो एसिड का जो लेंथ है, if it is 50 or less than 50, it will be called as a peptide. And if it is beyond 50, for example, insulin में बेटा you have 51 amino acids. तो insulin is a protein. बट अगर कोई ऐसा आपके पास सपोज कर आपके पास कोई X कंपाउंड है और आई शुड से एक X चेन है having 49 amino acids or 40 amino acids, it will be called as a polypeptide or simply a peptide. Okay, so guys जो हमारे पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं, generally they are peptide or protein hormones. Okay, so antidiuretic hormone, that is the vasopressin, oxytocin, pituitary hormones, hypothalamic hormones, insulin, glucagon, growth hormone, thyroid stimulating hormone, thyrocalcitonin, parathyroid hormones. These are, guys, what? These are peptide or protein hormones. Now you can look at, you can simply search, okay, vasopressin में कितने amino acids है, so whether it will be called as a peptide or it will be called as a protein. Now that is very easy to manipulate. Now, so guys, please remember this, that amino acid derivatives and peptide or protein hormones, these two are water soluble. तो बेटा मैं तुम्हें वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के लिए जो मैकेनिज्म बताऊंगा वो इन दोनों के लिए ही काम करेगा. ओके, सो दीज आर वाटर सॉल्युबल और हाइड्रोफिलिक. These are hydrophilic hormones. Now then let's move on to the next two categories. First one is of iodothyronins. Iodothyronins. तो iodothyronins क्या होते हैं guys? They are iodine containing hormones जिनमें बेटा एक special diphenyl ether ring system present होता है. So they have iodine. Point number 1. Second, उनमें बेटा diphenyl ether ring system present होता है in their structure as a side chain. क्या बताया मैंने? So iodothyronins में बेटा first they contain iodine, that's why you have this term iodine. And साथ साथ में उनका स्ट्रक्चर जो हम देखेंगे तो we will look at the diphenyl ether ring system in the side chain. You know about diphenyl ring system? So you will have 2 benzene rings. बीच में आपके पास बेटा एक ether का molecule होगा. ठीक है, so this is the first benzene. Then here you have ether. आपके पास बीच में ऑक्सीजन हो गया and then again you have this thing, right? The next benzene. So beta, this is a diphenyl ether ring system that will be present in the side chain.
ओके, सो इसका एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है, दैट इज द थायराइड हार्मोन्स, दैट इज द थायरॉक्सिन, थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन बेटा T3 T4 टेट्राआयोडोथ्राइनिन, ट्राइआयोडोथ्राइनिन, T3 T4, तो ये बेटा हमारे आयोडोथ्राइनिन से हार्मोन है, ठीक है। देन कम्स स्टेरॉइड हार्मोन। सो स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं, दे आर बेसिकली द डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कहां से डिराइव होते हैं, या वेरी गुड। सो लेट्स मूव अहेड देन मैकेनिज्म में। अब हम बेटा पहली बारी पे आ रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज ऑफ वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। तो बेटा वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स का क्या होता है, बेटा देखो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स क्या होंगे, दे विल बी हाइड्रोफिलिक, दे विल बी व्हाट, दे विल बी हाइड्रोफिलिक। तो बेटा क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं, इसीलिए दे कैन नॉट पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्टली। क्या होगा बेटा, वो डायरेक्टली, जैसे अगर ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो आपका जो हार्मोन है बेटा वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। इसे क्रॉस क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज हाइड्रोफिलिक, एंड वी नो दैट द कोर ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक। तो बेटा क्योंकि आपकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, वो तो एक हाइड्रोफोबिक, दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। सो हाउ विल इट अलाउ अ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा क्या होता है, ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, ये बेटा जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। क्या करते हैं, रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। नाउ इस बाइंडिंग की वजह से बेटा एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है सेल के अंदर, जिसकी वजह से बेटा आपका सेकेंडरी मैसेंजर डेवलप करता है। सो व्हाट इज अ सेकेंडरी मैसेंजर, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सपोज करो ये राम है, ओके, एंड ओके दिस इज आवर गाय राम, इसका नाम है बच्चे का, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड कि राम के पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था जो उसे अपने टीचर को देना था, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम सर, ये टीचर हो गए राम के। नाउ तो बेटा प्रॉब्लम है कि राम के पास वो मैसेज था, बट उसे बीच में एक अर्जेंट काम आ गया। तो क्या हुआ, राम ने अपना मैसेज श्याम को दे दिया, दैट्स द नेक्स्ट गाय, उसका बेस्टी है ये, ठीक है, हैशटैग BFF। तो ये उसका बेस्टी है। तो उसने कहा कि राम ने अपना मैसेज श्याम को दिया और कहा श्याम तुम जाके टीचर को दे देना, एंड दैट्स हाउ द मैसेज सर्कुलेटेड। दिस विल हैपन राइट ओवर हियर। अगर तुम्हें राम श्याम टीचर की कहानी समझ में आ गई तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। हार्मोन जो है वो बेटा अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो हार्मोन क्योंकि क्या कर नहीं कर सकता, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, उसे मैसेज तो सेल तक पहुंचाना है। सो हाउ विल इट डू इट, हार्मोन विल बाइंड टू द रिसेप्टर टू मेक द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। बेटा ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे रिएक्शंस को ट्रिगर करेगा, कुछ ऐसी चीजों को ट्रिगर करेगा। आई टेल यू क्या चीज को ट्रिगर करता है। सो बेटा कुछ ऐसे रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा जिसकी वजह से आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स डेवलप हो जाएंगे। तो हार्मोन बेटा हमारा प्राइमरी मैसेंजर है, ओके, दिस इज आवर प्राइमरी मैसेंजर। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्राइमरी मैसेंजर है, बिकॉज जो इनिशियली राम के पास ही मैसेज था बेटा, उससे एक साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, cyclic adenosine monophosphate CAMP in the presence of magnesium ion, as I said. So in the presence of these in the presence of the enzyme ATP and magnesium ion, ATP will be converted into CAMP, cyclic adenosine monophosphate, and बेटा साथ में आपके पास बनेंगे दो molecules of inorganic phosphate. Okay, so this is a reaction. तो आपके पास ये जो CAMP बना, यही बेटा आपका सेकेंडरी मैसेंजर है। तो सर क्या CAMP साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट ही इकलौता सेकेंडरी मैसेंजर? नहीं बेटा, सेल के पास कई तरीके के सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल CAMP साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, देयर कैन बी CGMP साइक्लिक guanosine monophosphate, there can be DAG diacyl glycerol, there can be IP3 inositol triphosphate, calcium ions can also act as secondary messenger, etc, etc. There are other examples as well, but these are the most popular one. Okay, so बेटा इसकी वजह से क्या होगा, so ये अब जैसे ही साइक्लिक AMP हुआ तो बेटा ये अलग से जैसे आपका सेकेंडरी मैसेंजर डेवलप हुआ, नाउ दैट सेकेंडरी मैसेंजर विल इनिशिएट अदर कास्केड रिएक्शंस। ये साइक्लिक मैसेंजर बेटा दूसरे रिएक्शंस को ट्रिगर करेगा। सो दैट दोज रिएक्शंस कैन बी कॉल्ड एज अ बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। तो साइक्लिक AMP विल जनरेट अ बायोकेमिकल रिस्पॉन्स इन अ सेल, मतलब कई सारे साइक्लिक AMP एक रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, कास्केड मैकेनिज्म को स्टार्ट करेगा। व्हाट इज द कास्केड मैकेनिज्म, कि बेटा एक रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है। ओके, सो दैट कास्केड मैकेनिज्म विल बी फॉलोड एंड ultimately you will get a physiological response. You will get what? You will get a physiological response. I hope it is all clear till here. Very good. Now let's talk about the mechanism of the next category, that is the lipid soluble hormones. तो लिपिड सॉल्युबल में हमने कौन कौन से पढ़े थे बेटा? आयोडोथ्राइनिन्स पढ़े थे, एंड द नेक्स्ट वन वाज
द नेक्स्ट वन वाज स्टेरॉइड हार्मोन. सो लिपिड सॉल्युबल में क्या कहानी होती है बेटा, जैसे कि हम नाम से समझ पा रहे हैं लिपिड सॉल्युबल है. सो लिपिड सॉल्युबल, they are going to be hydrophobic in nature. What are they going to be? They are going to be hydrophobic in nature. अगर बेटा ये हाइड्रोफोबिक है ना, और जो वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी तो हाइड्रोफोबिक है. तो बेटा क्योंकि हमारे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स आर हाइड्रोफोबिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक, तो बेटा क्या हुआ, ये दोनों भाई बहन हो गए, है ना, भाई भाई हो गए, बहन बहन हो गए, जो भी तुम कहना चाहो. तो ये इन दोनों में ये बेस्टीज हो गए, है ना. तो जो हार्मोन है वो बहुत ही इजीली आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकता है. क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं. So this is your hormone, and since it is lipid soluble in nature, it is hydrophobic, so it can easily pass through the plasma membrane. It can easily pass through the hydrophobic phospholipid bilayer. तो बेटा ये क्या करता है, बेटा किसी झंझट के एकदम आराम से आहिस्ता आहिस्ता बेटा ये तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर एंट्री कर लेगा. वंस द हार्मोन एंटर्स इनटू द सेल, बेटा ये अपने इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा. किससे करेगा? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से. प्लीज रिमेंबर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर. सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट जो बेटा हमारे वाटर सॉल्युबल प्रोटीन, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स थे, उनके केस में क्या था, in that case you had a cell surface bound receptor or a membrane bound receptor. In the case of lipid soluble you have intracellular receptors. तो इस केस में बेटा जैसे कि हमें दिखाया गया है कि जो हमारा हार्मोन है, इफ यू लुक, ओके, दिस डायग्राम हैज बीन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी. सो द हार्मोन इज एस्ट्रोजन. So जो एस्ट्रोजन है इसका जो रिसेप्टर है, अगेन द रिसेप्टर इज गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक फॉर द हार्मोन और द हार्मोन इज गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक फॉर इट्स रिसेप्टर. तो बेटा इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर. ओके, तो हार्मोन जो है वो सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड को क्रॉस करते हुए बेटा साइटोप्लाज्म के थ्रू वो एंटर कर जाएगा न्यूक्लियस में. नाउ वंस इट एंटर्स इनटू द न्यूक्लियस इट विल बाइंड टू इट्स इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जिसकी वजह से आपके पास अगेन क्या बनेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा. क्या बनेगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा. नाउ ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये सीधा जाके आपके जेनेटिक मटेरियल या फिर कह सकते हो आपके डीएनए से जाके बेटा उससे बाइंड करेगा. हमने क्या कहा, हार्मोन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, इट entered into the cell, it bound to it receptor, intracellular receptor, to make the hormone receptor complex. Now this hormone receptor complex will go and it will interact with the genetic material, that is the DNA. तो बेटा क्या कर सकता है, हो सकता है कि जो आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये आपके सर्टेन जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कर दे, या हो सकता है कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आपके कुछ जीन्स को इनएक्टिवेट कर दे, उनके ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर दे. ओके, सो मोटा मोटा कहने का ये मतलब है कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बना बेटा ये आपके डीएनए की एक्टिविटी को, कि मतलब कौन सा जीन ट्रांसक्राइब होगा, कौन सा जीन ट्रांसक्राइब इन द सेंस कि उससे एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए का ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनेगा. ओके, या फिर कौन सा प्रोटीन या कौन सा जीन ट्रांसक्राइब नहीं होगा, मतलब कौन से जीन को हमें एक्सप्रेस होने नहीं देना है. फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोजन जो है ये बेटा जाएगा अपना हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एंड दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कैन actually activate certain genes. So वो genes beta, because of binding of the hormone receptor complex to the DNA, those genes will get activated. The genes will undergo transcription to make the mRNA. Now mRNA से बेटा क्या बनेगा, after translation protein बनेगा. So बेटा जब ये प्रोटीन बन जाएगा तो ये प्रोटीन बेटा क्या लाएगा, दिस प्रोटीन विल ब्रिंग अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोजन क्या करता है, तो ये आपका टिश्यू ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए काम करता है. सो बेटा इसी तरीके से हार्मोन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. इन अ शॉर्ट समरी व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट द 4 कैटेगरीज. First was the amino acid derivatives, the second was the peptide or protein hormones, third was the iodothionein, and the fourth one was the steroid hormones. Now आपके ऊपर की जो है amino acid derivatives and the peptide and protein hormones, they are water soluble. So water soluble proteins hormones जो होते हैं, they bind to the membrane bound receptors that triggers the formation of secondary messenger. Now the secondary messenger further induces certain biochemical changes. Because of this biochemical changes, there is I should say biochemical responses. Now, because of those biochemical responses, there is a physiological response. In case of the next category, that is the lipid soluble categories, in which you have the iodothioneins and you have the steroid hormones. So the steroid hormones, they can simply diffuse into the cell through the phospholipid bilayer. They can go and can bind to the intracellular receptors that are there. For example, in the case of estrogen, the hormone has its receptor inside the nucleus, so it can be called as a nuclear receptor.
So the hormone estrogen will go and it will bind to its nuclear receptor. Now the formation of hormone receptor complex will interact. The hormone receptor complex will go and it will bind to the DNA. It will interact with the DNA, uh, either beginning the expression of certain genes, or it can also suppress the expression of certain genes. So for example, if हमने कहा कि हमारा जो hormone receptor complex है, if it is triggering the expression of certain genes, so those genes will undergo transcription, then translation, and finally a protein will be formed. Now those proteins can bring out the physiological responses, and this is the end of this beautiful topic. So if you have any doubt, you guys can ask me, or you can also mention it in the chat box. Now time to solve some questions. Okay, very important. Let's do some quizzes. Well, so this is the first question. Now match the following columns and select the correct option. You have to match it, and then you have to match first, and then you have to select which option should be the right one. Okay, so yeah, great. So any doubt, if you have, you guys can ask me. Any doubt, if you have, you can ask me, or else you can answer this question. What should be the right answer? Very easy. Okay, this one is very easy. I want all of you to answer this. Great. Any doubt, if you have, you can also ask your doubt. So, what should be the answer? Is it A? Is it B? Is it C? Or is it D? Is it A? Is it B? Is it C? Or is it D? Well, solve me, right? Okay, my time. सो पिट्यूटरी हार्मोन कौन सा हार्मोन है बेटा? एपिनेफ्रिन क्या है, एंडोर्फिन क्या है, एंड कोर्टिसोल क्या है? नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वेल मैचिंग इतने नहीं आते, बट दिस क्वेश्चन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमसीक्यू, एंड yeah, it can be asked. Like there's a very high probability that this question can be asked in NSEJS. Okay, so बेटा जल्दी से सॉल्व करके बताओ. किसी बच्चे को अगर तुक्का भी लगाना बेटा तो तुक्के भी लगा सकते हो, ठीक है? So, or else should I solve this one? So, what should be the right answer to this? So, the correct answer to this question should be B. Okay, B is the right answer. Yeah. So, pituitary hormone मैंने बताया तुम्हें. Pituitary hormones, okay, hypothalamic hormones, glucagon, insulin, growth hormone, etc., etc. These all are peptide hormones. Okay, so these are peptide hormones for sure. Now हमने कहा cortisol, तो you guys can check कि एक आंसर 3 होना चाहिए. 3 इसमें नहीं है तो दिस इज आउट. ओके, इसमें है. नाउ बच्चों को कोर्टिसोल के बारे में पता होता है. कोर्टिसोल इज वेरी पॉपुलर, तो हमें पता है कि स्टेरॉइड हार्मोन है, तो डी का 1 होना चाहिए. नाउ तो इन ए और बी और डी में से चेक करते हैं डी का 1 इसमें है, तो जस्ट लुकिंग एट 2 ऑप्शंस. ओके, नाउ दिस स्ट्रैटेजी यू गाइस कैन अडॉप्ट अगर तुमसे मैथ सॉल्व नहीं हो रहा है. ओके, यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी यू विल हिट द बुल्सआई. सो एपिनेफ्रीन क्या होता है गाइस? सो एपिनेफ्रीन इज अ बायोजेनिक अमीन, एंड एंडोर्फिन जो है इट इज अ न्यूरोपेप्टाइड. ओके, सो एंडोर्फिन, एपिनेफ्रीन, ये सारी चीजें आप बाद में पढ़ोगे. फॉर नाउ B is the right answer. Let's move on to the next question. Hormones which does not interact with the intracellular receptor are. Okay, so hormones which does not interact with the intracellular receptors. कौन सा है? Is it A insulin? Is it B iodothyronine? Is it C cortisol? Is it D estradiol? So guys, the answer to this question should be what? Is it A, B, C or D? The answer to this question should be A. That is insulin. So guys, iodothyronine, cortisol and estradiol. These two are steroid. It is an iodothyronine. Okay. So these two are lipid soluble. ये दोनों आपके lipid soluble हैं. So they will have their intracellular receptors present inside the cell. But insulin is a protein hormone, so it will have a membrane bound receptor. So A should be the right answer. Next question. According to the accepted concept of hormone action, if receptor molecules are removed from the target organs, then the target organ will. This is a purely NSEJS level question. बेटा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. इफ यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट, दैट ओनली यू विल बी एबल टू आंसर, एल्स प्रैक्टिस.
Okay, so is it A, continue to respond to the hormone without any difference? B, not respond to the hormone? C, continue to respond to the hormone but will require higher concentration? Yeah, option D, continue to respond to the hormone but in the opposite way. So what should be the answer to this question? Is it A, B, C or D? So guys, the answer to this question is B. गाइस मैंने कहा हार्मोन अपने आप को एक्सप्रेसिव रिसेप्टर के थ्रू कर सकता है. अगर आपका रिसेप्टर ही है तो द सेल विल स्टॉप और द टारगेट ऑर्गन विल स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू द हार्मोन. अगर सेल के पास रिसेप्टर ही नहीं है बेटा तो तू कौन मैं खाम का, वो वाली बात हो जाती है. हार्मोन आएगा खड़ा हो जाएगा बट हार्मोन नहीं समझ पाएगा कि मैं बाइंड कहाँ करूं, मैं सेल के अंदर एंट्री कैसे लूं. और सेल भी क्योंकि सेल पास रिसेप्टर ही नहीं है तो सेल भी नहीं पहचानेगा अरे ये क्या चीज आ गई मेरे सामने, है ना. सो दैट इज व्हाट विल हैपन. So B is the right answer. Now, hormones are called chemical signals that stimulate specific target tissues. What is the correct location of these receptors in case of protein hormones? Now, you have a protein hormone. You have to tell कि उसका receptor कहाँ present होगा. Is it A, extracellular matrix? Is it B, blood? Is it C, plasma membrane? Or is it D, that is a nucleus? Where it will be present. Okay, so the student is saying it should be C. Yeah, C is the right answer. That is a plasma membrane. Very good. So जो हमारे प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं बेटा दे आर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स और द सेल सरफेस रिसेप्टर्स. So of course plasma membrane to go. Why? Because a protein hormone will not be able to pass through the hydrophobic core of the phospholipid bilayer. Now extracellular matrix, blood, nucleus तो बेटा ये तो बेकार है. न्यूक्लियस के अंदर वो पहुंच नहीं पाएगा. ब्लड तो बेटा ब्लड तो तुम्हारा एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू, राइट. तो वो सेल कहाँ हुए ब्लड में, राइट. यू हैव टू डील विद द ब्लड के अंदर हार्मोन होगा बट द हार्मोन वांट्स टू एंटर इनटू द सेल, इट वांट्स टू ट्रिगर अ सेल. सो बेटा ब्लड में नहीं होगा. एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स अगेन ए काइंड बी द आंसर. सी इज द राइट आंसर. नाउ which of the following pairs of hormones are the examples of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to a receptor inside it, mostly in the nucleus? So you have to select out of these 8 hormones which pair consists of those hormones that can easily pass through the phospholipid bilayer and can enter into the cell and can bind to the intracellular receptor. Okay, very easy and very important. So what should be the right answer? I believe the answer should be D, cortisol and testosterone. Guys, insulin एक water soluble है, glucagon water soluble, both are protein hormones. Thyroxine is a lipid soluble, it is a isothionin, but insulin is a water soluble one, it is a protein hormone. Somatostatin SS, तो बेटा ये एक तुम्हारा water soluble है. Oxytocin is again water soluble, both are pituitary hormones. Okay, मतलब somatostatin is basically produced from hypothalamus. Both are produced from hypothalamus. Oxytocin is released from the posterior lobe of pituitary gland. Somatostatin जो है it binds to the pituitary gland and it inhibits the production of growth hormone. Okay, so somatostatin and oxytocin both are hypothalamic hormone. Sorry, I said pituitary hormones. Cortisol and testosterone, yes, both are lipid soluble. Both are the steroids. दोनों के दोनों steroids हैं. Steroid hormones हैं. Okay, and done. Thank you very much. Now, if you have any doubt, you guys can ask me. What? Any doubt? If you have, you guys can ask me. Any doubt? If you have, you guys can ask me. Do you have any doubt? Very good. Okay, so guys, we'll meet in the next class with another very interesting topic. So please be excited. Keep on revising. Keep on practicing as much as you can. And don't forget to like to the video, subscribe to the channel. And कोई doubt हो, you guys can mention it in the comment box. Bye everyone. Good night. Take care. Enjoy your vacations. Bye.